Hello and welcome back once again to your favorite channel, and that's Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. Well, I'm Pushpendu and आज फिर से we are live with the session on Animal Kingdom. Sorry, Animal Kingdom done. We are going to talk about an animal today. It's an arthropod, and we are specifically going to talk about the cockroach. Well, so this is the session 5, fifth session, पांचवा session है from the chapter Structural Organization in Animals. First of all, let me see who all are live, and today is a very special day. Thank you all for your lovely wishes. Thank you, Mansi, Sugata, Adin. After long days, I'm seeing you, Adin. What is this? Dipu. Thank you, everyone. Aditi, Sugata, Wakas, Arif, Lakshmi, Ishika, Prem, Aditi, Astha, Rupinder, Lakshmi, Aparna, Harishchandra. Thank you so much for showing so much of love today, right? So I know that it's Teachers' Day. Today also in the morning, I wished my teachers, a lot. Because of them, whatever I'm doing, wherever I am right now, is because of my teachers. So I really thank them for helping me out, for showing me the right path towards what I want to do, what I need to do, and what I would love to do in my life. Thank you all my teachers. Thank you all my students for being there and for showing so much of love to this Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. So once again, a quick opportunity for you. I'm talking about the Aakash National Talent Hunt Examination. You know about it. Quickly enroll yourself for this examination. See the prizes, a visit to NASA, and that's totally for free. Okay, great. Yes, well, these are some of the sessions which are going on. You know about this. We also have a droppers batch which is already started, from 1st of August. Yeah, check this out. NEET or JEE 2023 courses, repeaters or 12th past batches, you have the opportunity to get up to 50% scholarship. Okay, so register quickly for free and check out all the opportunities that we have for you. Great. So 11th of September, there's a special session being conducted by Dr. Sachin Kapoor, one of our favorite teachers, your favorite teacher. I still learn from him. He's one of my role models. So yes, Dr. Sachin Kapoor, he's going to come live with you talking about complete roadmap to NEET 2023. That is on 11th September, 12:30 p.m. So mark your calendars. And now, download the app, try it 14 days for free, see what we have for you. Please like the session, subscribe the channel, share it with your friends, and let's start with the next session, which is the 5th session from the chapter Structural Organization in Animals. Adin, I'm perfectly fine. Rahman, welcome back. Sugata, Periplaneta Americana. Perfect. Also, thank you. And, like the way you are thanking me for me being your guide, your teacher, I would also want to thank you for being my students. I am in fact lucky that I have got such brilliant, such good students for myself. I'm very happy for that. Thank you. Well, chalo, आज शुरू करते हैं with cockroach. So, this is something that we have to study. Well, this topic, I would say, this topic may seem to be difficult. आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको थोड़ा difficult लग सकता है अगर आप without diagram पढ़ने की या learn करने की, रटने की कोशिश करोगे तो अगर आप दिमाग में, if you keep the pictures of whatever I'm going to show, of course the cockroach, then it becomes easier for you. ठीक है, all of you? Well, thank you so much, all of you. Sanjana, who is this? Surjit, for the first time. Deepman, I'm perfectly fine. Thank you.
वासु। चलो शुरू करते हैं कॉकरोच, और एवरीवन डायग्राम देख देख के पढ़ना है, दिस वन, फाइन। अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव, अच्छा टेल मी वन थिंग, या मयंक भाग के जाओ or bring your NCERT, because something which I am going to teach you here, you should mark it on your NCERT. Also, let me ask you, I see a lot of students who had given the examination in 2022. You are there. Did you check your marks? Did you check your marks? Yes or no? Good evening. Who is this? HD Status Official. What a name. Hi. What is your name, dear? I'm seeing you for the first time in this channel. Can you tell me your name, please? Yes, Sugata, perfect. Cockroach से direct picture से question आता है. Oh, Deepman, you are suffering from malaria. बेटा, take care. अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, please you do not have to attend the class. आप rest लो. ये session recorded रहेगा और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. मैं फिर से वापस आऊँगा live with you. So, आप आराम करो. आप देखो बीमार हो जाओगे तो आगे वाले सेशंस आप अटेंड नहीं कर पाओगे. सो आप अभी आराम से रेस्ट लो, अच्छा खाना खाओ, रेस्ट लो और जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना. ऑल माई विशेस फॉर यू, जल्दी से ठीक हो जाओ. ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं कॉकरोच. ध्यान से, ओके. नाउ आपने ये देखा होगा, एक तो है रेडिश ब्राउन जैसे दिखता है, एक ब्लैक कलर्ड. ऐसे टाइप ऑफ कॉकरोचेस वी हैव सीन अराउंड अस. नॉट ओनली दिस, कुछ जगह पे ट्रॉपिकल रीजन्स, वहां पे रेडिश कलर कॉकरोचेस भी मिलते हैं, ग्रीनिश, येलोइश, ऐसे कलर्ड कॉकरोचेस भी मिलते हैं. स्पेसिफिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रीनिश वन, इफ यू सी, यू विल फाइंड देम वेयर देयर आर पाइल्स ऑफ वुड्स, लॉग्स. यहाँ पे ग्रीन कलर कॉकरोचेस मिल जाएंगे आपको. ईशांक, अवनी, हेलो. विजय, you got 410 first attempt, good, but I want the best from you. Okay, perfectly fine. If you're repeating, no problem. Vijay, thank you. So we will try it again 2023. Let's focus. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा ज्यादा है आज सेशन, so let's do it quickly, है ना. These are nocturnal organisms. You know the meaning? आपको मतलब पता है? Do you know the meaning? Do you know the meaning? Arif, thank you. Sugata. Nocturnal मतलब पता है? Can you tell me on the chats quickly? Chat पे बताओ जल्दी. Can you quickly tell me on the chats? Come on. Chats थोड़ा सा slow आ रहा है मेरे पास. Can I see it quickly? You don't know? Oh! Omnivorous पता है? नाइट वाले, हाँ, करेक्ट. ये कुछ हमारे ही जैसे हैं कि दिन में हम थोड़ा लेजी रहते, बट स्टूडेंट लाइफ में स्पेसिफिकली रात में हम जगते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, है ना. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अस. नॉक्टर्नल. इनफैक्ट माय मॉम टेल्स मी, मतलब तुम क्या हो, आप हमारे जैसे तो नॉर्मल नहीं लगते हो, रात को पूरी रात जगे रहते हो. So that's I think, and that's a characteristic feature of all the students. Yes, they are active at night, right? Prefers damp places. They are omnivorous, मतलब plant, animal product दोनों ही खाते हैं. Size range देख लो, 0.6 centimeter to about 7.6 centimeter size range होते हैं, correct? अच्छा, so ये कौन से फाइलम है? Arthropoda. Right? Arthropods मतलब jointed legs, jointed appendages. You know this. Active at night. No sir. वासु, आप रात को जगते नहीं हो. Okay, that's good. In fact, that's good. ये normal life cycle नहीं है. रात को जगे रहना और दिन में थोड़ा सा सो के फिर से active रहना it's not a good diurnal. Okay, that's good. So ये अच्छा life cycle नहीं है. In fact, we should change. I also try to change. But again, it's at times difficult. Jointed legs. Now, so
कॉकरोचेस के पास 3 pairs of legs है. देखो, I'm showing it to you. 3 pairs of jointed legs, or other 6 legs बोल सकता हूं मैं, and hence they belong to the class Insecta. Class Insecta, phylum Arthropoda. Got it? All of you? Perfect. बढ़िया. आगे बढ़े? Well, did you know about this? Let me tell you. There are about 4,500 species. 4,500 species of cockroach which is live in this planet. Okay? But only 30 of them, around 30 species, you know, we will find them adapting to environment where we live. ये 30 जो species है, ये इंसान के आसपास मिल जाता है. But actually, there are around 4,500 species of cockroaches. Yes, largest phylum. Okay. But सिर्फ 30, that's also huge. 30 species of cockroaches around us. That's not good, right? That's not good. Specifically, you know, they are one of the most commonly found household pest, along with the houseflies, the ants, beetles, bees. ये भी one of the most common, you know, pest है, household pest. So we are going to study about, someone already has mentioned this, Periplaneta Americana. इस नाम में थोड़ा सा ग्लिच है. Can anyone tell me? इस नाम में थोड़ा सा ग्लिच है. There's some problem, misnomer, I would rather say. Can anyone tell me? मोहम्मद साजिद, सालिम, hello, how are you? कैसे हो आप? Can you tell me ये नाम जो है Periplaneta Americana, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Can anyone tell me what is the problem for in this name? Poisonous? ना सर, ना. मैं नाम से बता रहा हूं. You know, the name and its meaning. The name and its meaning. इसके बेसिस पे बताओ. Name and its meaning. America, Spanish language. ठीक है? Let's see. Who can tell me this? Come on. थोड़ा सा मैं बता देता हूं. चलो आगे बढ़ते हैं. Well, scientific name ये है Periplaneta. Periplaneta मतलब है that is present all over the planet. But Americana, it's not actually correct. Americana बोलते तो है. This is misleading. They actually belong to Africa. American species नहीं है. These are African species. ठीक है? These are African species. Fine. So sleep eyes ready. Okay. These are African species. Got it? हाँ. But Americana क्यों बोलते हैं? So basically the point here is ये Americana इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अमेरिका में जरूर पाया जाता है. But it has reached there by chance. It has reached there by chance. You know, when the ships are all used to sail there from Africa to America, वहां के through they reach this landmass. But actually origin from Africa. So, well, perfect. आगे बढ़ते हैं. Nice story. Size range around 34 to 53 millimeters. देखो, size range. Wings का एक specific characteristic feature है. Beyond the tip of the abdomen in males. Males में देखो, abdomen का tip यहाँ पे है, पर wings थोड़ा सा आगे extend करते हैं. Got it? Happy Teachers Day. Who is this? Arvind. Hello. हाँ, Sanjay, right? Sanjay, I'll talk about this. Give me a moment. I'm coming to the blood part of the cockroach. Wait.
Dorsal side, the above side, dorsal side has wings, right? It has got wings and a large plate. Okay? यहाँ पे दिख रहा है antenna. This arise from the head region of the cockroach. और इनके पास compound eyes भी होते हैं. Got it? They have got compound eyes. This is the antenna. These are the compound eyes, as you can see, and this is the protonum. Right? I'm talking about the large plate. Large plate. This. Okay? This is called the protonum. Sorry, pronotum. It is called pronotum. P-R-O-N-O-T-U-M. Pronotum. I spelled it wrong. It's not protonum. It's pronotum. Right? Compound eyes, antenna है और ये large plate है जिसे pronotum कहते हैं. Fine, got it? Perfect. Great. चलो आगे बढ़ते हैं. Brilliant. Wings तो दिख ही रहा है, आपको पता है. Morphology ventral side से मतलब below. Ventral sides. Antenna दिख रहा है, head region दिख रहा है आपको, legs दिख जा रहा है, right? Jointed appendages, and this is the abdomen region. अच्छा. Do you recall the exoskeleton and the endoskeleton? Endo मतलब अंदर, हमारे पास endoskeleton है. Exo मतलब बाहर की तरफ से जो skeleton है. Shrimp जैसे crab if you talk about. So इनके पास बाहर से hard covering है. Similarly, if I talk about cockroach, morphologically what happens is that they do have a chitinous exoskeleton. बाहर से skeleton है. It is divided into plates. ये जो दिख रहा है इसको sclerates कहते हैं. These are nothing but the plates. विद्या, nice, that's good. इसको sclerates या तो plates कहते हैं. Fine. In fact, plates है जिनको sclerates कहते हैं. Got it? Sclerites are joined to each other by delicate arthrodial membrane. ये sclerites जो है plates बहुत सारे हैं. ये एक है, ये एक है, ये एक है. ये सारे arthrodial membrane से joined है, right? These are thin, flexible membrane which joins these sclerites. Got it? अब sclerite समझ में आया? देखो यहाँ पे membrane दिख रहा है. Arthrodial membrane दिख रहा है, all of you? हाँ. चलो आगे बढ़े. Now, the body of the cockroach is covered with a hard chitinous exoskeleton and is divided into plates. ये देखो. This is the dorsal sclerite, जिसे क्या कहते हैं? Terga. Terga भी कहते हैं. Sterna. It's a ventral sclerites. Ventrally, नीचे की तरफ से. इसे क्या कहते हैं? Sterna. और ऊपर की तरफ से डॉर्सल के साइड में जो है इसे टर्जा कहते हैं. टर्गा काफी कुछ लोग टर्गा भी कहते हैं बट टर्जा भी बोलते हैं. राइट? ओके. फाइन. परफेक्ट. नाउ एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स. देखना, कभी भी अगर आप कोशिश किए होंगे कि उनके ऊपर आप अगर पानी डालोगे, इट्स टोटली वाटरप्रूफ. इट्स टोटली वाटरप्रूफ. पानी ऐसे निकल जाएगा. मुस्कान, थैंक यू. रानी, यू आर बिट लेट एंड थैंक यू फॉर योर विशेस. गॉड ब्लेस यू. क्वेश्चन टाइम. जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दो मुझे. जल्दी से एक सवाल का जवाब चाहिए. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द आंसर. So the question is, the terga and the stern of the cockroach body are joined by, you have the options and it's very easy because I've just discussed about it right away. Come on, tell me. Thank you, Richa, for your wishes. Protection. इसका जवाब दो. Come on, quickly. And session के likes थोड़ा सा बढ़ा दो. Question दिख नहीं रहा है? मयंक? The question is on the screen. I think the question is there. Astha is telling B. Harish Chandra C. Harish, आप थोड़ा सा follow नहीं कर रहे हो. I've just discussed it, beta. Perfect. Everyone is perfectly answering the question. Great. It's B.
Arthrodial membrane. Well, did you know about this? Here's an interesting fact about the cockroaches. Cockroaches are equally scared of human beings. They run away. They run away. You are scared, right? I'm not scared, honestly. But yes, I've seen most of us, at least during our childhood, we are scared of the cockroaches. We are scared of the cockroaches, right? So, but cockroaches, on the other hand, they are also scared of us. And even you will see, if you touch them, they'll try to clean themselves. They don't like our touch. Okay? Well, great. Chalo, आगे बढ़े. Now, I'll talk about the major regions of the body of a cockroach. The head, see the thorax, and what you see right now is the abdomen. Head, thorax, and the abdomen. Head के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जल्दी. Head. Head region, देखो थोड़ा triangular head है. Triangular head है. उल्टा actually. Vertex नीचे की तरफ. Triangular head है. The head is bent at right angle to the body axis. Head ना इनका body axis से right angle में bend है. Got it? अच्छा, you're scared of lizards? The neck is very flexible. Neck is very flexible. In fact, जिसकी वजह से इनका head all directions में घूम सकता है. हर direction में वो अपना neck घुमा सकता है, head को घुमा सकता है, because the neck is very flexible. I'll show you. See here. Epicranial plates. These are the plates. Okay. Just you can see it. These are the fronts. कौन सा पोजीशन है, कहाँ है, बस इतना ही जानना है आपको. ठीक है. Jenna, this one, this part. Clypeus, this part. Head के कुछ important portions. अब head पे eye है. Eye is compound. One pair of compound eyes. Compound eyes आपको पता है कि छोटे छोटे units रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? Can you tell me? Ommatidia. Okay? Ommatidia कहते हैं हर एक यूनिट को. कंपाउंड आई है, मतलब पूरा जो आई है इसमें बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स रहते हैं. That's the reason it's a compound eye. What is the scariest part of a cockroach? Well, the scariest part is, you know, their antenna, right? Well, their antenna is nothing but a sense organ in the cockroach. They arise from the membranous sockets. A pair of antennae is there. It helps in the senses. Eye के front में. Now let me talk about the mouth parts which is present in the head region. एक एक करके मैं बता रहा हूँ. Okay. Now, mouth parts of the cockroach helps in biting and chewing, right? Biting, chewing type mouth parts ही इनके पास, because it does take in the solid type of food. Solid type of food. ठीक है. एक एक करके देखते हैं. Labrum. This is the upper lip. Now, lower lip दिख रहा है. Labium. Lower lip. Mandibles दिख रहा है. ये देखो mandibles. Mandibles दिख रहा है. They help in grinding the food. Help in grinding. Help in grinding. Okay. Maxilla. A pair. दो है. A pair of maxilla, right? Okay. And I can see the hypopharynx. The hypopharynx, which is nothing but the tongue. Hypopharynx is nothing but the tongue. Got it? And it is flexible in nature. Got it? Head तो हो गया. अब thorax के बारे में बात करते हैं. Thorax region. चलो. Thorax में prothorax, mesothorax and the metathorax. Three segments: prothorax, mesothorax and metathorax. Head is connected to the thorax by an extension of the prothorax. Head एक extension which is prothorax इससे connected है. Correct? Okay? And you know the sclerites of the prothorax is large. They're quite large. And they're called the pronotum. They call the pronotum. Fine, got it?
चलो, now they have the four wings, आगे वाला जो wings है, right? The tegmina arise from the mesothorax से ही arise करते ही है. They're opaque, dark and leathery in nature. They do not help in flight. ये flight में, उड़ने में help नहीं करते. This is the four wings. Fine. पता है इसका काम क्या है? They cover and protect the hind wings. Now let me talk about the hind wings. They arise from the metathorax और ये mesothorax. So ये question आ सकता है कि four wings कहाँ से arise होता है and the hind wings कहाँ से arise होता है. These are transparent. ये था कैसे? Opaque. They're dark, but these are transparent, membranous in structure, and these are the ones, the hind wings. The hind wings, they help in the flight. ये सब उड़ने में help करते हैं. Did you ever try catching a cockroach? I have tried. And if you have tried, आपको पता चल गया होगा, they are very, very, very fast. बहुत तेज है, क्योंकि they are very fast. You know, it's very difficult to catch cockroaches. They are very fast. ठीक है? Around 1.5 meters per second इतना स्पीड में ये भाग सकते हैं. ठीक है? अब ह्यूमन इक्विवेलेंट अराउंड 200 माइल्स पर आवर, इतना स्पीड से भाग सकते हैं. ह्यूमन इक्विवेलेंट टू 200 माइल्स पर आवर. वेरी फास्ट. यस. चलो, लेग्स के बात करते. प्रोथोरैसिक लेग्स मतलब थोरैसिक सेगमेंट के आगे वाला जो लेग है, मेसोथोरैसिक लेग एंड द मेटाथोरैसिक लेग. ठीक है? फाइन. सो 6 legs on the ventral side, 6 legs on the ventral side जो कि प्रोथोरैक्स से आते हैं उसको प्रोथोरैसिक लेग बोलते हैं. जो मेसोथोरैक्स से ओरिजिन होते हैं उसको मेसोथोरैसिक लेग, एंड द मेटाथोरैक्स से जो ओरिजिन होता है उसको मेटाथोरैसिक लेग कहते हैं. दैट इज इजी, राइट? फाइन. चलो, नाउ पार्ट्स. सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है. पार्ट्स देख लो. टार्सस, एज वाला जो पार्ट है. टिबिया, एज के बाद वाला जो पार्ट है. फीमर, दिस इज द पार्ट, थोड़ा सा ये चौड़ा है, मोटा है. एंड दिस पार्ट, इफ यू सी द ट्रोचैंटर, दिस इज द coxa, right? Now the tarsal segments, tarsomeres. Tarsus is divided into 5 segments called the tarsomeres. Tarsus कहां पे देखा? ये tarsus. ये 5 segments में divided है. इसको tarsomeres कहते हैं. Last tarsomere, tarsal claws. Last tarsomere में क्या है? Tarsal claws है. और tarsal claws have the aerolium, right? This helps in adhesion, sticking. ठीक है? स्टिक करने में हेल्प करते हैं. देखना, वो क्लाइंब कर सकते हैं वॉल, ऐसे सीधा वॉल को भी क्लाइंब कर सकते हैं. किरण, थैंक यू. वेलकम टू द सेशन वंस अगेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्डोमेन. एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं, है ना? चलो. सो 10 segments both in males and females. Males and females दोनों में ही 10 segments है. फीमेल्स में थोड़ा ब्रॉडर है. मेल्स में मैंने बोला था क्या कि ये जो विंग्स है ये थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं एब्डोमेन से भी, राइट? फाइन. बट इसमें मेल फीमेल में 10 सेगमेंट्स है, बट एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट्स. एम्ब्रियो. जेनिटल पाउच इन मेल्स. एब्डोमेन में जेनिटल पाउच है मेल्स में. डॉर्सली 9th and 10th टर्जा में प्रेजेंट है. वेंट्रली 9th स्टर्नम में प्रेजेंट है. देखो, दिस इज द जेनिटल पाउच. ठीक है? फाइन. इट कंटेन्स द डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल genital pore and gonapophysis. It contains these, right? Gonapophysis is the organ which helps in copulation. Gonapophysis is the organ which helps in copulation. ठीक है? Gonapophysis. This helps in copulation. Fine?
ठीक है। जेनिटल पोर, इसमें क्या है? द ओपनिंग फॉर द इजैक्यूलेटरी डक्ट। जेनिटल पोर जो है ये कुछ नहीं है, ये ओपनिंग फॉर द इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैं मेल्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जेनिटल पाउच को एक चेंबर भी कहते हैं, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज चेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज चेंबर, ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन। परफेक्ट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। हाँ, फीमेल की बात करूं, फाइन। जेनिटल पाउच, इनको ब्रूड पाउच भी कहते हैं, जेनिटल पाउच को ब्रूड पाउच भी कहते हैं। सेवेंथ स्टर्नम जो है वो बोट शेप्ड है। अब देखो, सेवेंथ स्टर्नम जो है वो थोड़ा सा बोट शेप्ड है, गॉट इट? फाइन, ठीक है। क्या क्या है देखो, कोलैटरल ग्लैंड्स, स्पर्मेथिका, स्टर्ना, यू कैन सी द फीमेल जेनिटल पोर, राइट? यहां पे स्पर्मेथिकल पोर्स आर मल्टीपल, स्पर्मेथिकल पोर्स आर मल्टीपल, ठीक। माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स और ओपनिंग्स है ये ऑर्गन में, राइट? नाउ और क्या दिख रहा है? कोलैटरल ग्लैंड्स, कोलैटरल ग्लैंड्स आर टू हाईली ब्रांच्ड tubular glands in cockroach which are unequal in size. Fine. Gonopore होते हैं, which is the genital pore. This is the genital pore. Shivakar Dubey, thank you. This is the genital pore. अनिरुद्धा बेटा स्टार्टिंग ऑफ द सेशन देख लो एक बार, मैं बता दिया है, I have already informed कौन कौन से बैचेस और क्या क्या क्लासेस चल रहे हैं, है ना? चलो आगे बढ़े। नाउ एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एनल सर्सी, एनल और द कॉर्डल साइज सर्सी, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं मेल्स में सिर्फ एनल स्टाइल से। ओके, एनल सर्सी अगर बात करूं, दीज आर फिलामेंटोस, दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन द 10th सेगमेंट। फाइन, sensory structures in the 10th segment. Anal style, these are pair of short, छोटे होते हैं anal styles, you know, unjointed leg like structures होते हैं। Fine. Sexual dimorphism show करना मतलब आपको पता है, males and females can be distinguished easily, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि they show sexual dimorphism, and females में anal styles नहीं होते हैं। So please note, मेल्स में एनल स्टाइल्स होते हैं, फीमेल्स में एनल स्टाइल्स नहीं होते। एनल सर्सी दोनों में ही है, ठीक है। दीज आर नथिंग बट द सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द 10th सेगमेंट। गॉट इट? फाइन, चलो आगे बढ़े। अ क्विक रिविजन ऑफ द मॉर्फोलॉजी दैट वी हैव स्टडीड सो फार, देख लो। ठीक है, फटाफट देख लो अब, then we'll move on with the anatomy part of it. ये सब पढ़ लिया, अब anatomy पढ़ते हैं। So first let me start with the alimentary canal. So did you know cockroaches are not picky eaters. वो कुछ भी खा सकते हैं, plant products, animal products, और कुछ भी खा सकते हैं ये लोग, है ना? सर्वाइवल के नेम पे ये डेड कॉकरोचेस भी खा सकते हैं। दे कैन ईट डेड कॉकरोचेस ऑल्सो। ओके, कुछ क्वेश्चंस तो मैं इस सेशन के दौरान मैं कराऊंगा, राइट? एंड डोंट वरी, वी विल कम अप विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस ऑल्सो। ये तो होंगे ही, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नीट एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम। सो आकाश बाजूज में ये तो होने ही वाला है। कौन पार्टी दे रहा है यहाँ पे? श्वेता, हु इज गिविंग पार्टी हियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल। वी हैव द फोरगट, वी हैव द मिडगट एंड द हाइंडगट। फोरगट में क्या क्या चीजें हैं, ऑर्गन्स है? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड द गिजर्ड। एक एक के बारे में बता देता हूं मैं, ठीक? The foregut, alimentary canal, lined by the cuticle. The foregut starts with the mouth. It is present in the head region. ये mouth head region में present है.
It leads to the pharynx and then leads into the esophagus. Simple. Mouth, pharynx, esophagus. Esophagus opens up into a wide sac-like structure which is used for storing of food, and that is the crop. Fine. This is the crop. It is used for storing food. Crop leads into the gizzard. And what is the function? What is the function? Gizzard का function किसी को पता है? Can anyone tell me what is the function of the gizzard? Crop तो समझ में आ गया. Gizzard का function क्या है? Tell me. What is the function? पता होगा आपको. Gizzard का function grinding. Yes, very good. It helps in grinding of food. Circular muscles and cuticle forms the chitinous teeth. Teeth जैसा नहीं है, but circular muscles और cuticle present है जो कि teeth जैसा काम करते हैं. It helps in grinding of food. है ना? देखो. Teeth-like structure. Midgut में क्या क्या है? The hepatic ceca and the malphizian tubules. Let me talk about it. The midgut, it helps in digestion and absorption. The midgut helps in digestion and absorption. Hepatic or the gastric ceca, it secretes the digestive juices. यहाँ से digestive juices secrete होते हैं. और malphizian tubules जो है वो excretion में help करते हैं. Very important point, very important topic. Questions can be asked. Malphizian tubules क्या होते हैं? These help in excretion. Okay. Midgut को mesenteron भी कहते हैं. Mesenteron. Midgut को mesenteron भी कहते हैं. ठीक? यहां पे foregut और midgut का जो जंक्शन है वहां पे अराउंड 6 to 8 tubule like structures है. 6 to 8 tubule like structures which are called as hepatic or the gastric ceca. These secrete the digestive juices. Fine? Got it? चलो आगे बढ़े. Now hepatic हो गया, midgut, malphizian tubules I have explained. आगे बढ़े. Hindgut, ileum, colon, rectum. This is something, the same names you will encounter when you study about human physiology also. These are broader than the midgut. Rectum opens through the anus. ठीक है? तो एक narrower ileum है, coiled colon है, and एक wide short rectum भी है जहां से excretory waste pass होते हैं. Rectum opens out through the anus. So a quick revision of the alimentary canal. Well, did you ever by chance, by mistake, stamped a cockroach? कुछ ऐसे दिखेगा. The color of the fluid which comes out is not red. It's not red. So let's study blood vascular system. Blood vascular system. Hemocoel, body fluid, body cavity filled with blood. They do have blood. Okay. These have open type because blood does not flow through blood vessels. These have open type of circulatory system because blood do not flow through blood vessels. Rather, blood is pumped into the body cavity. Fine. Visceral organs, जो भी organs placed है, these are bathed in the blood. इससे ही exchange होते हैं. The gaseous and the energy, waste exchanges, gaseous exchange, waste exchange, nutrients exchange, यहाँ से ही होता है. The organs are bathed in blood. Fine. Hemolymph जो मैं बात कर रहा हूँ, hemolymph, this is a colorless plasma and contains the hemocytes. ये colorless है. तो red blood नहीं मिलेगा आपको, है ना? Okay. Visceral organs, these are bathed in the hemolymph. Got it? Fine, all of you? Perfect. ये very important है. This is very important. Three sinus. The body cavity, the hemocoel, it is divided into three sinus region. ठीक? Sinus मतलब कुछ नहीं, chambers. Rather, I would talk about chambers.
these are nothing but the chambers. ठीक है? चलो, pericardial sinus encloses the heart. Of course, नाम से समझ में आ रहा है, cardial, pericardial. Perivisceral sinus, this will enclose the visceral organs, and perineural sinus encloses the nerve cord. आप देख रहे हो, this is the pericardial sinus, perivisceral sinus, and the perineural sinus. Fine. Now see here, the blood vascular system, we are talking about the heart. This is present in the pericardial sinus. This is present in the pericardial sinus. This consists of elongated muscular tubes, funnel-shaped chambers with ostia. दिख रहा है? Heart of the cockroach consists of elongated, लंबे muscular tube है. Okay? Mid dorsal line के along ये पाया जाता है. Okay? Got it? Now, this you will see get differentiated into funnel-shaped chambers, right? With ostia on either sides. Got it? Heart is associated with the alveolar muscles, and this helps the heart in pumping blood. This helps the heart in pumping blood. Of course, open circulatory system, I've already mentioned this to you, right? So यहाँ पे I've shown you that they do not contain red blood, but the blood is colorless due to the absence of respiratory pigment. Common एक GK question जैसा है, you know, questions is asked. चलो respiratory system के बारे में बात कर लेता हूँ. The tracheal system, they have spiracles. These are nothing but the openings on the sides. About 10 pairs of spiracles है, जिससे, you know, the gaseous exchange happens. The air enters and reaches the tracheal tubes, right? 10 pairs of such openings are there. 2 pair, 2 on the thoracic, okay, thoracic region, and 8 on the abdominal spiracles. 8 pairs of abdominal spiracles. ये spiracles को openings, sphincters, कुछ sphincters है जो कि इन spiracles को opening को regulate करते हैं. ऐसे नहीं खुला रहता है. It is also regulated. So yeah, exchange of gases by diffusion, spiracles to trachea, to tracheoles, to the cells. तो ऐसे जाते हैं. Got it? Fine. So tracheoles are the fine tubes which deliver the oxygenated body fluid to the cells, bathe करवाते हैं, and then the exchange happens. Got it? Chalo. Now the excretory system quickly. Excretory system, we have just had a basic introduction. Excretory system, Malpighian tubules are there. 100 to 150 thin filamentous structures are present. These give out the nitrogenous waste, which is in the form of uric acid, and hence cockroach is uricotelic organism. Okay, uricotelic organism. Fine. So यहाँ पे Malpighian tubule is very important. That helps in excreting out the nitrogenous wastes. ठीक? और किस फॉर्म में? यूरिक एसिड. So don't forget, uric acid के फॉर्म में excrete किया जाता है. A quick question for you. Quickly answer. The major excretory product of cockroach is urea, ammonia, uric acid, creatine. Easy question. I have just explained this to you. Tell me a very easy question. Tell me quickly. What is the answer for this question? Uricotelic. मतलब क्या है? What is the answer? Ah, perfect. I got it. Asta C, Rani, you're telling C. Kalpesh, C. Moin, C. Rani, you're telling uric acid. ठीक है. All of you are telling C. Perfectly fine. And this is the correct answer. Yes, C is the correct answer. So we have done this, right? Alimentary canal हो गया, blood vascular system हो गया, respiratory system हो गया, excretory system हो गया. After this, we will be talking about in the next class nervous system and reproductive system. So that is it for today's session. All of you, once again, thank you for your wishes.
thank you for joining Aakash BYJU'S. Thank you for joining my sessions here live. I wish you all the best. एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अब तक बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं. So what you have to do is keep on revising. बीच में मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा, बट I would request you जो बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT एक्सप्लोरर, जो भी बुक्स है आपके पास, बेसिक सवाल सॉल्व करना शुरू कर दो. और जो लोग ड्रॉप ले रहे हो, आपको तो पता ही है कॉन्सेप्ट्स, आप एक प्रॉपर बुक पकड़ो और उसको सॉल्व करो. ठीक है, कीप रिवाइजिंग. अगर हो सके तो इस सेशन को बाद में भी फिर से देख लेना, बट what is important is revision, because I understand, I agree to it, acknowledge this कि chapters like this what I am discussing right now, right, यहाँ पे काफी theoretical concepts हैं, काफी चीजें हैं, काफी names है जो आपको याद रखना पड़ सकता है. So वहाँ पे there is no alternative to it. It's all about practice. So keep practicing, things will be easy. So for today I'll say goodbye. Thank you everyone for joining in, but please keep revising. I'll see you in the next session, 6 p.m. again on the same channel. Thank you. Take care. Bye-bye.